ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट लिया है बिकॉज आई कुड नॉट स्किप एनी कंटेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक यहाँ पे क्या है, वी ऑल नो ना कि दिस न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम because this neuron is a highly specialized structure. Yeah, so तो ये स्लाइड में we'll try to see the different parts of the neuron. तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, the neuron, this neuron is made up of two different parts. One is cell body, second कौन सा है, cell process. ठीक है, one is cell body which is also called as cyton, और second कौन सा है, cell process, जिसमें आता है axon and the dendron. ठीक है, so we will study this. So first point about the cell body is that cell body, which is also called as soma, or it is also called as perikaryon. Okay, peri means what, surrounding the nucleus. So this body is actually surrounding the nucleus part of the neuron. So that is why it is also called as perikaryon. Okay, so these are the different synonymous words which we use for the neuron, the cyton of the neuron. ठीक है, एक और नाम इसका कौन सा है, cyton. So cyton is also called as cell body, soma and perikaryon. ठीक है, so this, what is special feature of the first the cell body is that it is uninucleated. It means it has only one nucleus inside it, inside the cytoplasm. Now you can see on the this right side of the image, आपको दिख रहा है? So this part is called as what, the cyton or the cell body. Is it clear? और इसके बीच में ये जो क्या है, this is a nucleus. So in the exam they might even ask you for the labeling of this like they might have asked for they might ask you for the different labels of this diagram. ठीक है, तो ये क्या है, cyton, and inside the cyton, in the cytoplasm of the cyton, what is present, nucleus is present, single nucleus. ठीक है, but एक important point क्या है कि they do not have centrioles. Anyone can tell me that why they do not have centriole? So because they do not divide. Exactly, they do not divide. Why? Because they are specialized cells. So in which phase of the cell cycle they are present right now when they are not dividing? G0. Exactly, in the G0 phase of the cell cycle. Okay, so is it clear? So this cyton or the cell body contains a single nucleus, but so it will have all the cell organelles. Okay, it will have Golgi bodies, it will have some lysosome, it will have mitochondria, it will have endoplasmic reticulum, ribosomes, everything, but it will not have centriole because there is no use of centriole. Why? Because this cell is no longer going to divide further. Okay, so that is why this cell body does not have any nucleus, sorry, centriole. उसके बाद next is what, Nasal's granule, which is very very important for the functioning of the neuron. Okay, and with, like, this Nasal's granule is unique for the neuron, like it is only present in the neuron. तो ये होता क्या है, actually it is a specialized endoplasmic reticulum which is specialized for the synthesis of different proteins, and that protein is needed for the functioning of the neuron. क्या होता है, it secretes specialized proteins, some chemicals, okay, some neurotransmitter also. Okay, so this endoplasmic reticulum along with the ribosome is called as what, Nasal's granule. So this is the name of the scientist who discovered this granules inside the cyton of the body. So that is why it is called as what, Nasal's granule. So what is Nasal's granule? It is made up of endoplasmic reticulum and the ribosomes. सबको याद रहेगा? Yes. हाँ सर.
चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, the small fibrils forms the neurofibril for internal conduction. So inside the cytoplasm, there are many small neurofibrils are present, very, very small neurofibrils are present. And these neurofibrils, which I think so they have not given this image, but these neurofibrils are useful for the internal conduction of the impulse. इसका meaning क्या होता है? Suppose for example, this dendrite is receiving some information. Okay, yeah, they have given. So this neurofibril will help in the conduction of the information to the next part of the neuron as well as like this. So for the internal conduction of the impulse, this neurofibril is present. ठीक है? तो साइटोन के अंदर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ऑल. कौन सा होता है? द फर्स्ट वन इज निजल्स ग्रैन्यूल and the second one is what? Small fibrils. ठीक है? So this Nizel's granules are specialized for making the special proteins and some kind of neurotransmitter for the proper functioning of a neuron, and these small neurofibrils are useful for the internal conduction of the neuron or the nerve impulse. ठीक है? So you can note down this fast. Then we will move ahead. यहाँ तक clear है सबको? Any doubt about the structure of the cell body, soma or the perikaryon or the cyton? So एक ही नाम है. So any doubt about this? Sir. No doubt. चलो. तो next part जो है that is called as cell process. Okay. So what is cell process? Again, some kind of cytoplasmic extension of the cell, and these cell processes are unique to the neuron. ये बात याद रखना. Why they are unique? Because their function is unique. ठीक है? You might have learned during the cell structure and function topic. एक बहुत ही अच्छा term आता है. It's a very beautiful term, and the statement is like this: form follows function. इसका मीनिंग क्या होता है? द फॉर्म ऑफ एनी सेल इज डिटरमाइंड बाय इट्स फंक्शन. तो जैसे ये न्यूरॉन कैसा फंक्शन, ऐसा फॉर्म क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन. ठीक है? तो सेल प्रोसेस में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स, और द प्लूरल वर्ड इज व्हाट? डेंड्राइट्स. इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डेंड्राइट्स. ठीक है? सो इधर यू कैन कॉल इट एज अ डेंड्रॉन्स or the dendrites, दोनों same ही है. ठीक है? Okay, so they have given, yeah, they have given, like receptors are called as what? Dendrites. So suppose these are like if you see here, these are the dendrons and the receptor present on it. Okay, so there is slight structural difference between dendron and the dendrites, but in some textbook they have given synonymously, they have used these dendrites. ठीक है? बट एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है? इफ यू सी, दिख रहा है? सो दिस एक्सटेंशन, दिस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज व्हाट? डेंड्रॉन्स. ठीक है? जो ऐसा है. एंड द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन इट, ओके, द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन इट, लाइक दिस रिसेप्टर. ठीक है? आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर है. सो दिस रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? डेंड्राइट्स. यहाँ तक क्लियर है? Yes. चलो, तो एक नया और कॉन्सेप्ट, सेंट्रीपिटल कंडक्शन. अपने अगेन you all are aware about the different kinds of like the forces, centripetal and centrifugal. So in this context, in the biological context, the centripetal means what? Towards the nucleus or towards the cell body. So ये सब जो है, this dendrons, so actually it will receive signal via dendrites, and then it will send signal towards the cell body, which is considered as a center of a cell. So as the signal is moving towards the center of a cell, so that is why this type of conduction is called as centripetal conduction.
समझ में आ रहा है? So what is centripetal conduction? The conduction of impulse towards the cell body is called as what? Centripetal conduction. ठीक है, इतना क्लियर है आपको? समझ में आया? सेंट्रीपिटल कंडक्शन क्या होता है? The what we can call like the conduction towards the cell body is called as centripetal conduction. और ये कौन करता है? Dendrons. ठीक है, तो एग्जाम में they might ask you this, that what which part of the neuron helps in the centripetal conduction of the neuron, the impulse. Even though आपके NCERT में they have given very less information about the structure of the neuron, but I think so you should know all this point, है ना? Because we should not leave any stone unturned. So that is why I'm trying to include as much important information as possible. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ है कि that the content is going to very heavy, ऐसा कुछ है क्या किसी के लिए? No ना? चलो. So next जो है, so right now we have learned about the structure of the cell body, then we have discussed about the cell process. Next, which is the last part of the axon, but one of the longest process. Okay, so one of the longest process of neuron is what? It is axon. It is the longest process. But again, very important point. It has uniform diameter. मतलब जो diameter होता है ये axon का, it is uniform. It means the diameter of the axon will not change throughout its length. Its diameter will be constant or the uniform. Okay, and at the end it will bifurcate. It will bifurcate to form the telodendron or the synaptic node. ठीक है, फिर एक और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, that is called as axolema, that is a covering of the axon. तो देखो axolema और myelin sheath is different thing. ठीक है, axolema क्या होता है? It is a covering which is present just next to the axon. फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा? myelin sheath. ठीक है, so axolema is what? It is the covering of the axon, so that is called as axolema. तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द एक्सॉन. फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? यू कैन सी, देखो ये पार्ट पे भी फोकस करो, फोकस ऑन दिस पार्ट. सो अज्यूम करो कि जैसे सपोज दिस इज द एक्सॉन, ठीक है, सपोज दिस पार्ट इज एक्सॉन. सो एक्सॉन के दोनों साइड में क्या होगा? एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट होगा? एक्सोलीमा, मतलब जस्ट कवरिंग ऑफ द एक्सॉन. फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा? द माइलिन शीथ विच इज वेरी थिकेस्ट, है ना? माइलिन शीथ इज व्हाट? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, ये भी याद रखना आपको. सो दिस प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू द एक्सॉन. तो ये हो गया माइलिन शीथ. उसके बाद फिर क्या प्रेजेंट होगा? द साइटोप्लाज्म ऑफ द श्वान सेल. फिर श्वान सेल का जो बाहर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. इतना क्लियर है? सो न्यूरिलेमा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन, बिकॉज अपने को पता है ना, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द माइलिन शीथ, two type of neuron is present. One neuron which is having myelin sheath is called as myelinated. And the neuron which does not have myelin covering or myelin sheath is called as non-myelinated neuron. Okay, if you are not aware, I will tell you in the later part of this chapter also. तो दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं. First is myelinated, which has myelin sheath. Second one is what? Non-myelinated, which does not have myelin sheath. यहाँ तक clear है सबको? Yes. Yes. Tell me fast. Yes. Yes, sir. Good, good. चलो. फिर next यहाँ पे क्या है? This axon hillock. ये जो एक्सॉन हिलॉक होता है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस साइटोन. देखो ये किसका पार्ट है? साइटोन का. ये एक्सॉन का पार्ट नहीं, बट
from that axon hillock actually axons will arise. देखो मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा ये दिख रहा है आपको, दिस इज द पार्ट ऑफ द साइटोन जहां से क्या स्टार्ट हो रहा है ये व्हाइट वाला. So the part of the exciton from where the axon is arising is called as what? Axon hillock. ठीक है, तो ये axon hillock क्या होता है, मतलब it is a trigger zone. मतलब कि जो आप लोग पढ़ोगे और इस चैप्टर में कि होता है पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, तो वो स्टार्ट कहां पर होता है, दैट इज ट्रिगर्ड. और स्टार्टिंग ये जो है ना एक्शन पोटेंशियल, वो स्टार्ट कहां पर होता है, एक्सॉन हिलॉक. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद ही रखना है. ओके, एक्सॉन हिलॉक इज द साइट फॉर द इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल कहां पे स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स ऑन द एक्सॉन हिलॉक. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. गुड. और आप अगर देखोगे ये जो एक्सॉन है ये भी सेल का ही पार्ट है ना, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन बॉडी. ठीक है, ये एक्सटेंशन है उसका. तो अगर आप देखोगे ये जो निजल्स ग्रैन्यूल्स है ना, सो दिस इज लिमिटेड, इट्स इन ओनली इन दिस साइटोन. मतलब ये सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है, साइटोन में. ये एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. तो इसका मतलब ये हुआ, दिस एक्सोप्लाज्म दैट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द एक्सॉन इज विदाउट निजल्स ग्रैन्यूल. ओके, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोफाइब्रिन and mitochondria. Why mitochondria? Because it is needed for the proper conduction of the action potential and for the generation and for the movement of what, for the movement of neurotransmitter chemicals. तो अगर आप देखोगे ये डायग्राम, क्या आपको दिख रहा है, ये डायग्राम एक छोटा सा कुछ टेल के जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसने पॉइंट आउट किया है, दिख रहा है सबको? So this is what, न्यूरोफाइब्रिन. तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोफाइब्रिन और माइटोकॉन्ड्रिया. हालांकि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ Schwann सेल, बट माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां पर कहीं प्रेजेंट होगा. यस, यू ऑल आर गेटिंग दिस. लास्ट 3 or 4 points for today's lecture, but yes, you all are getting this. Please be honest. Yes. चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, the telodendron, that is the last part of the this neuron which stores some kind of neurotransmitter chemicals like the acetylcholine or the dopamine, which helps in the conduction of impulse from the one neuron to the different neurons. Okay, so the detailed structure we will learn about the structure and function of the synaptic gap. But for now what we can understand that this telodendron or the synaptic node is a place where, so it will connect with the other neuron, जहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सिनेप्टिक गैप फॉर्म होता है. और उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, वो सब. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस. तो वहाँ पे ये जो है सिनेप्टिक नोड के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव टू मेक सम काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. सो फॉर दैट रीजन दे हैव लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, and the last क्या है, the term nerve fiber usually referred to the axon which is a functional part of the neuron. So this is like, तो मतलब जो हम लोग कभी भी यूज करते हैं ना वर्ड ये nerve fiber, तो वो किसके लिए यूज करते हैं, actually it includes the part of the axon. ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, when we learn the difference between nerve fiber and ganglion, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है, बट फॉर नाउ आप इसे जस्ट रिमेंबर कर सकते हो दैट द नर्व फाइबर, द टर्म नर्व फाइबर यूजुअली रेफर्स टू द एक्सॉन व्हिच इज फंक्शनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. इज इट क्लियर? यस? Yes, sir. Yes, sir. Honestly, okay, so this is how we have for today's lecture. We have we will stop here till the structure of the neuron, and this was a basic structure of the neuron and its function. Okay, and in the next lecture we will start with the different parts of the nervous system and its function. Okay, so any doubt? No? No, sir. Chalo. No, sir.